There are so many good companies. Buy them. Don't go for this iBank and this. As you saw today in US, the banks were hammered down. Some were down 65%, 30%, 4%, 10%, 20%. Imagine if something like this happened over here. What would have happened? I'm only saying, please be on cash. If you are not on cash, mark my words, you will be screwed to hell. Now, screwed is a bad word, and anybody objecting to it, I will not mind. Language is my problem. I cannot speak something without abusing, but I'll try not to abuse. I said moron, so one lady said it's a bad word. So I asked my wife, what is moron? So she said idiot. Now, if idiot is a bad word, God save the king. Okay, back to valuations over here are so expensive. Insurance companies, life insurance, are quoting at three times embedded value or whatever. In China, you get it at 1.25, 1.5. Very big companies, and they don't move. Now, please redeem some of your mutual funds because you don't understand one thing. I think there is around 30 trillion in mutual funds, or thereabouts, a rough figure. If only 2-3% is 2-3% comes to the market for redemption, do you think this market will take that much load? No way. This market is very liquid. भाव है सौदा नहीं है. In old times, during the ring times, somebody would ask me what is the rate of so and so script. So I would say 100, 105. So he's saying 5,000 diya. So I said I don't want to buy. I was not com- compelled to buy. So this market is like that. Nobody wants to buy. Rate hai. Be careful, be watchful. Again and again, I'm telling you, this money is not your money. It is the money of your family. Please. And I've in my life seen three, four ups and downs. How it comes, how it happens, it you don't realize. And before that, the problem is there. So please reserve, please keep some cash. About valuations, Indian valuations are the highest in the world. Automobile, paint, and ceramic, what not, steel, cement. इंडिया में ही सब कुछ महंगा है. अब शुरुआत हो गई है. कहाँ तक टिकता है देखना है. और बहुत सारा लोग मजाक उड़ाया 12,000 12,000. अरे है यार 12,000. If you take 50% of the stocks, they are at 12,000.
अपने केडिया साहब अच्छा अच्छा बात बोलते हैं। मुझे डर लगता है आपसे ये हो, फिर ऐसा गंदा ट्वीट मारते हैं मेरे बारे में। क्या आदमी है, 55-60 का हुआ फिर भी सुधरा नहीं। बी डिसेंट। एक एक भाई ने मेरे को अपना स्टेटमेंट भेजा पीएमएस का, और बसंत महेश्वरी जो टीवी पे आपके बड़बड़ 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 करता है, अनाप शनाप बोलता है। 5.7% रिटर्न पर ईयर फ्रॉम 2017। 6 साल हो गए। तो उतना तो एफडी में मिल जाता है यार। फिर दिखाया उसने मोतीलाल ओसवाल, वही पीरियड में 30% रिटर्न, ऑल इंक्लूडेड, मतलब उधर से लेके यहाँ तक। तो क्या है क्या, आप लोग टीवी पे आके के इतना बड़ा बड़ा बात करता है, आपका ही ऐसा परफॉर्मेंस है तो क्यों आप पब्लिक को उल्लू बनाता है। बोलो ना कि हमको नहीं आता है, हमको सिर्फ भाषण करना आता है। अल्फ फेरारी, अब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है फेरारी नहीं है, ऐसा सब क्या फालतू का बात करते हैं। अरे यहाँ पे आओ, समझाओ आदमी लोग को कि शेयर बाजार क्या है, शेयर क्या है। आपका पोर्टफोलियो, मैं गारंटी, मतलब आई एम नॉट विशिंग इल, बट इतना स्पीड में नीचे आएगा ना, आपने सोचा नहीं होगा। बिकॉज शेयर बाजार में एक ही नियम है, घूम फिर के मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन होता है होता है होता है होता है होता है। कोई अगर इसको, ओ ठीक है यार, मतलब 10 स्क्रिप्ट में नहीं होता होगा, बाकी 90 स्क्रिप्ट में तो होता ही है। ये रिलायंस है, मैं पहले बोलता था 1600 1700, अभी बोलता हूँ 1500 आएगा। आज मैंने देखा कोई बायर ही नहीं है, कौन ले लेगा। और टाटा मोटर, फिर ये बजाज फाइनेंस, हाँ, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बढ़िया कंपनी। खराब रिजल्ट, गंदा रिजल्ट आया, 2400 हो गया। फिर हम लिख दिए कि ये बेस्ट सेल है, तो ऑपरेटर को या जो भी होगा गुस्सा है, आई डोंट नो व्हाट इट, उछाला। फिर बोला बेंगलोर फेयर में ऑर्डर मिला, और उछाला, 2900 कर दिया, 2400 का 2900। अगर कोई अ, मतलब अगर किसी को बाई चांस इंग्लिश आता हुए नंबर्स पढ़ने को, पढ़ लेना। जंक है ये, जंक। लेकिन नहीं, उधर ऑर्डर मिला है। अरे यार क्या ऑर्डर, आज तो एक हेलीकॉप्टर उसका डूब गया, बॉम्बे आई के आसपास, मालूम नहीं किधर। वो मैं एक टिकर पड़ा था। तो ऐसा सब शेयर लेके आप, ये ये अपने ही स्पेस में है। इतने लोग बोले एरोस्पेस एरोस्पेस, ये क्या एरोस्पेस, एक क्या एरोस्पेस है क्या। एरोस्पेस होता है रेथॉन, लॉकहेड, ये सब एरोस्पेस है। रेथॉन रेवेन्यू $70 billion, मार्केट कैप $140 billion।
ये सब है। ये क्या छुप 4,000 5,000 करोड़ का टर्नओवर पर क्वार्टर करता है, इसको क्या कम नहीं बोलते अपने। फिर बोलते हैं बाद में बड़ा बनेगा। अरे बड़ा भी बनेगा तो वो कितना बड़ा? वो तुमने ऑलरेडी उसका पी 22 पे ला दिया, रेथोन का है 27 पे। कैसा टिकेगा ये? एक ये एग्जाम्पल है। आप ले लो, क्यूमिंस ले लो, 665 का भाव है। सॉरी, वो 1665 का भाव है। आपका जूता मेरा सर। अगर ये 3-4 हजार नहीं हुआ ना, मेरा नाम शरद नहीं। आई एम नॉट लॉन्ग, आई वॉज लॉन्ग 30,000 शेयर्स। I sold it off between 1680 and 85 and 70, I don't know exactly. मैं बेच दिया, लेकिन वापस मैं लूंगा। ये बाजार थोड़ा ठीक होएगा, वापस लूंगा। तो आप ऐसा शेयर लो ना, कितना अच्छा अच्छा शेयर है अपने वहां। लेकिन आपको तो इंजेक्शन चाहिए रोज। आपको हेरोइन का आदत लगेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये अरे छोड़ो, क्या करना है तेरे को। आपके पास में कौन सा 10-20 हजार करोड़ रुपया है कि आपको निफ्टी में हेजिंग चाहिए? तुम्हारा जेब में वो 2 लाख रुपया भी नहीं है, और तुम निफ्टी खेलता है, बैंक निफ्टी, व्हाट फॉर? ये तो ये तो ऐसा हुआ कि बिना गाड़ी के, विदाउट अ व्हीकल, यू आर टेकिंग कार इंश्योरेंस। यू आर सो स्टूपिड। आपके पास निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई सौदा नहीं है, फिर आप ऑप्शन लेते हो, क्यों लेते हो? अगर हैज ही करना है, वो तो लो ना। पर आपके पास तो सौदा है ही नहीं, तो ऐसे ही यू बाई कार इंश्योरेंस विदाउट अ कार। ये बात है। ये फिर एक बात क्या था? बता दिया। समझ में आप ले, फिर मेरे को याद आता है तो बोलते हैं। नहीं सर, वॉट एवर यू सेड आई एग्री विथ यू। एंड प्लस जो जिस तरह से अभी यूएस बैंक्स में जो हो रहा है कार्नेज, दैट इफ एनीथिंग हैपेंस ड्रास्टिकली, तो अपने लिए तो खराबी है। वी आर नॉट इम्यून टू द सिस्टम विच राइट नाउ यूएस इज फेसिंग। तो ओवरऑल वहां पर भी रेट इंटरेस्ट रेट हाइक जो हुआ है लास्ट 6-8 मंथ्स में, उसका ही रिजल्ट है ये। और एसेट लाइबिलिटी मिसमैच की वजह से ये सब हुआ है। एंड दिस कैन हैपन टू आवर सिस्टम आल्सो। आवर सिस्टम इम्यून नहीं है, बट रिजल्ट्स कैन बी सीन इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। बट जो छोटे वाले बैंक है उसमें ज्यादा इश्यू है। बड़े वाले बैंक में कोई इश्यू इतना मेरे को लग नहीं रहा है अभी। बस वही था सर, आज का वॉल्यूम भी अच्छा है एंड क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक कर दिया है इंडेक्स ने। बाकी का सर जो हेवी वेट्स है, रिलायंस, इट इज ऑल्सो have a has a broken ट्रेंड लाइन, बड़ी ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक किया है। and now it is heading towards 1800 to 2000 levels. बस वही था सर, मोटा मोटा। विल बी ऑन म्यूट। सर्वेंद्र या अभिषेक या अमित, नहीं नहीं, डॉक्टर एक अमित। मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ सर। ये जो आपने बैंक का बोला ना, यस सर। कोई भी होशियार आदमी, कोई भी इंडिया का होशियार आदमी मेरे से डिस्कस करे और समझावे मुझको कि इंडियन बैंक्स आर प्रॉपरली प्राइस्ड, दे आर मिसप्राइस्ड, ह्यूजली मिसप्राइस्ड। उल्लू बनाते हैं लोग। ये वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता है। एक हमारे दोस्त जो यहाँ फोरम में है,
वो भड़केंगे मेरे पे, लेकिन रिलायंस बहुत गंदा लगता है, बहुत ही गंदा लगता है उसका जो चाल है। और मैं बता दूं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कैपिटल इंटरनेशनल सोल्ड रिलायंस 100%। शुक्रवार को नहीं मालूम है, आज का नहीं मालूम, लेकिन कैपिटल इंटरनेशनल का माल आ रहा है। कैपिटल इंटरनेशनल वो नल, मतलब और टंकी का नल है, एक बार नल खुलता है तो बंद नहीं होता। और दूसरा बात था बैंक, ये वो नो, कैरी ऑन अभिषेक। sir. SBI was down 5%. Canara Bank was down 3.5%. ये जितना भी है इंडेक्स हैवी स्टॉक्स, रिलायंस was down like crazy. मतलब that 2300 का एक लेवल था रिलायंस में, which has not been broken this past 1 year, and today it's gone. So by hook or crook, if they manage to take it up above 2300, then maybe there is some chance. Otherwise, see, like you would think decoupling, coupling, whatever the theory is, but यहाँ से I think no matter what the US market does, अपना bazaar is gonna go much lower, because first of all we are I think 25% above by the US as of now in indices levels. ठीक है, 100 की तो बात पूछो ही मत, सर ने बताया थे। मेरे को लगता है चल होना चाहिए 2000 रुपये मिनिमम, मे बी मोर, बट yeah, that's the round figure I was thinking about looking at the charts. Then you talk about stocks like मतलब एकदम चिल्ले अभिषेक चिल्ले आपका आवाज नहीं आ रहा है, बाद में आओ आप। स्टॉक है यार। ओके ओके, यस, आप I'll come back in 10 minutes. Yes, yes. अभिषेक आपका आवाज नहीं आ रहा है। बाद में आओ आप। I'll come back 10 minutes. या हाँ सर्वेंद्र भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, यस, लेकिन आप तो पेड़ वाले हो, आपको हम बोलने नहीं देते। लेकिन अच्छा, आप हमारे क्या बोलते हैं, अच्छे मित्र है, वो कारण से आपको हम अलाउ नहीं नहीं करेंगे। सर, आप अपने रूल्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो रूल्स बनाए वो ठीक है। नहीं नहीं, बट रूल्स आर फॉर एक्सेप्टेंस, ओके ओके एक्सेप्शन टू द रूल्स। ओके ओके। नहीं, मैं तो जो जो आपने ट्वीट की, मैं तो वो सब करता ही नहीं। मैं तो ब्रॉड मोटा मोटा व्यू देके, इसलिए मैं तो स्टॉक्स भी डिस्कस नहीं करता हूँ कि भाई मोटा मोटा बाजार का ध्यान नहीं दे लो। और बाजार का ध्यान तो वही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा तो व्यू सबको मालूम ही है। हर एक 15 नहीं नहीं, सर्वेंद्र जी भाई, सर्वेंद्र भाई, ये लोग यहाँ पे आके झगड़ते हैं और मेरी टाइमलाइन पे आके वो मेरे को टैग करता है, वो मेरे को टैग करता है। अरे क्या है यार, क्या, व्हाट नॉनसेंस इज आई दिस? एग्री सर, आई एग्री। आइए अपना व्यू शेयर करिए और निकल जाइए। मतलब झगड़ा करने की क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आता है। अनलेस अंटिल समथिंग इज समवन इज डूइंग अ मिस्टेक और एक सीनियर उसको करेक्ट करना चाहता है, तो आप उसको एज अ जूनियर करेक्ट करके ले लीजिए, काम खत्म। झगड़ा करके क्या होएगा? तो दे आर सीनियर्स कमिंग टू द स्पेस। अगर कोई सीनियर बोलता है तो किसी जूनियर को, आप बोलते हो हम सुन लेते हैं, हम बोलते हैं तो हमारा कोई जूनियर सुनना चाहिए। और हम जो बोलते हैं यहाँ पे बस लोगों के भले के लिए ही बोलते हैं। वी जस्ट वांट टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। जो अभी तक सब लोग बाजार का लोगों ने नहीं, मेरे को याद है जी एक दो बार आपने मेरे को करेक्ट किया था, तो आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली कि हाँ यार, ये तो मेरा गलती है। जी, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। और अगर आप मुझे बोलते हो कि यू आर रॉन्ग, तो भड़कने का क्या बात है? मुझे मेरा गलती सुधारना है।
बिल्कुल, 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 सबसे गलतियाँ होती हैं। हम ये 20-20 साल बाज़ार में रहने के बाद हमसे भी 2 गलतियाँ हो जाती हैं। दैट इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट बिकॉज़ इट सक्स यू इन द सेंटिमेंट एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर द लास्ट few many months that this is a weak uptrend. This is a weak uptrend. It cannot create a bull market. All it can do is 100-200 points up there. ये वो स्टॉप लॉस खाएगा आपका, वो सब करेगा, वो सब किया भी बाजार ने 18,500-600 पे जाके स्टॉप लॉस खाया एक बार सबका, हमारा भी खाया, हम भी 2 दिन देखे, फिर हम तो द होल आइडिया इज यू टू बी निम्बल फुटेड, जैसे आप बोल रहे थे, आपको दोनों तरफ करना आना चाहिए, आपको समझने आना चाहिए कि कहाँ पे गलत हो गया है या कहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया है, कहाँ पे ब्रेकडाउन फेल हो गया है। इधर केसेस में यू हैव टू बी एबल टू टर्न एंड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। टेक्निकल्स का तो यही एक मंत्र है, और बाकी आप फंडामेंटल्स करते हैं तो वो तो आपको मेरे से बहुत ज्यादा मालूम है, तो उसमें मैं कभी जाता ही नहीं हूँ। बट यहाँ पे इस स्पेस में अगर लोग देखें तो यू बीइंग ऑन द फंडामेंटल साइड एंड मी बीइंग ऑन द टेक्निकल साइड, मोटा मोटी हम वी आर ऑन द सेम पेज फॉर द लास्ट 15 मंथ्स, गिव और टेक, बीच में 15-20 दिन महीना में हम ऊपर नीचे हो गए, मैं अंदर बाहर हो लिया, वो ठीक है, बट ब्रॉडली ओवर द लास्ट 15 मंथ्स वी हैव बीन ऑन द सेम पेज, व्हिच मींस टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स कैन आल्सो मैरी। एंड व्हेन यू डू द लार्जर ट्रेंड्स, आप डे इन डे आउट ये 100-100, 200 पॉइंट में जो लोग लगे रहते हैं, और किसी का भी एक वीडियो देख रहा था कि किसी ने कोई एक ऑप्शन लेके इतना कमा लिया, उसी की तालियां बज रही हैं, लेकिन जाके किसी ने ये नहीं देखा कि खाली 4 लॉट ट्रेड हुए थे। अब 4 लॉट, एक लॉट में 30,000 बना भी लिया, तो खाली 4 लॉट ट्रेड हुए थे उस भाव से, तो पूरा इंडिया ने 1,20,000 रुपए बनाया, उसमें तो 4 लोग ही तो पैसा बनाएंगे। सो ऑप्शंस को इतना गलत तरीके से मार्केट किया जा रहा है दैट पीपल थिंक दैट इट इज सम अलादीन का खजाना, मतलब इट इज सम बिग कोई सोने की खदान है कि बस निकलते ही रहेगा। अरे भाई, पहले बाजार में आए तो समझना पड़ेगा, देयर इज लिमिटेशन टू अ वॉल्यूम। जिस प्राइस से आपको जो चीज चाहिए, आपको अनलिमिटेड नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। देयर इज अ फाइनाइट वॉल्यूम इन द मार्केट। उससे ज्यादा माल आपको नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा आप नहीं कमा पाओगे। तो अल्टीमेटली जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि लोगों को बुरा लगता है वैसे ही, कि दिन की मजदूरी 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया, इंट्राडे की मजदूरी वही है। अब आपको वही मजदूरी करनी है तो करो यार, सुबह 9 से 3:30 तक करो, लो ब्लड प्रेशर, लो हाइपरटेंशन, लगे रहो। नेट रिजल्ट तो 500 रुपये ही है ना, हिस्सा तो 500 रुपये ही है पर पर्सन। वो अलग बात है, कोई उसमें से 1 लाख कमा लेता है और कोई बेचारे, कोई लोग बाकी 500-500 रुपए लॉस भरते हैं उसके लिए। तो कोई लॉस भरेगा, कोई कमाएगा, बट नेट रिजल्ट यही है कि 500-600 रुपए पर दिन पर डे के हिसाब से ऊपर का मार्केट शेयर है नहीं, उससे ज्यादा की कमाई का ऑप्शन है नहीं। 1% लोग ज्यादा कमा लेंगे, बाकी 99 लोग उनको पैसा देके जाएंगे। मतलब क्या है? तो वही समझाता हूँ कि भाई समझ के करो, थोड़ा पोजिशनल करो, थोड़ा एटलीस्ट मरी हालत में थोड़ा पोजिशनल करो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन मिनिमम सोचो, फिर मीडियम टर्म सोचो 3-6 महीना, लॉन्ग टर्म सोचो 12-12 महीना प्लस, एटलीस्ट इतना तो सोचो। हम तो वैसे भी 2-2 3-3 4-4 साल आगे के ट्रेंड देखते हैं, बट एक बेसिक आदमी को भी कम से कम इन्हीं दायरों में सोचना चाहिए। 1 से 15 दिन के लिए शॉर्ट टर्म, 15 दिन से लेके 3-4-6 महीने, 6 महीने के लिए मीडियम टर्म, और 6-9-12 महीने के लिए प्लस उसको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। उस टाइम फ्रेम को अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो आप दिन भर अंदर बाहर होते रहोगे, पैसे कुछ बनेंगे नहीं। नहीं, अगर आपको पैसा बनाना है शेयर बाजार में, आप कितना भी ट्रेडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आपका पैसा नहीं बनेगा। आपका पैसा बनेगा बाय एंड होल्ड में। एंड बाय एंड एंड सेल एंड होल्ड में भी बनेगा सर, 2 साल का सेल का भी ट्रेंड आता है, बाय एंड होल्ड एंड नहीं, सेल एंड होल्ड। अरे बट ऐसा बॉल्स किस में होगा यार, वो छोड़ना सर्वेंद्र भाई। ओके, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है आम जनता के लिए। वो मेरे को तो बेचैन नहीं होता है तो रात भर नींद नहीं आती है। सर सो आपके डीएनए में ही है ना सर। नो, कीप इट असाइड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बड़ा पैसा, जिंदगी का बड़ा पैसा बाय एंड होल्ड में ही आएगा। बट देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट डू यू बाय। नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कही है, अगर लोगों को समझ में आ जाए तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट यू हैव सेड कि बड़ा पैसा बाय एंड होल्ड में बनता है। और मैं डीएनए से बुल हूं, बट फिलहाल 15 महीने से बेर बना घूम रहा हूं, बट मैं डीएनए से बुल हूं। अरे वो नहीं नहीं बॉस, everybody is a bull because from birth only we want things, एब्सोल्युटली, mother's milk, एब्सोल्युटली। so that's ingrained in us, but I have overpowered that, but inside deep down I am also a bull। और अगर कोई मुझे बेर बोलता है तो माँ
कसम, इतना इडियट आदमी होगा, अरे पोर्टफोलियो है और तू मेरे को बेयर बोलता है। अरे ये तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है मेरा। मैं ट्रेडिंग करके क्या उखाड़ लूंगा? 10, 20, 30, 40, उससे ज्यादा क्या होगा? सो डोंट ट्राई दिस ट्रेडिंग एंड शॉर्टिंग without proper guidance, otherwise you'll be screwed. आपको 3 रुपया बढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि दौड़ा 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 मैं मर गया। सो प्लीज, ये आज वो सोना स्टार का क्या कुछ नाम था, वो डील पड़ा 12 करोड़ शेयर का। ये क्या है कि 400-500 रुपए का आइटम का ये माल चिटकाया जा रहा है, किधर जा रहा है किसको मालूम भाई। LIC है ये वो क्या, आई डोंट। अभी LIC से याद आया, अडानी वो बोला 4.5 या 5% अंबुजा बेचा। भाई किधर बेचा, कौन से एक्सचेंज पे बेचा? पेमेंट हो गया 2 बिलियन समथिंग समथिंग, but where is the entry? Because there is a law, any Indian equity can be sold only on the exchange, and if there is a strict transfer of more than 0.5% off market, you have to notify the exchange. कहाँ पर है? कोई एक आदमी पूछता नहीं है, सुन लिया हाँ बिक गया बिक गया बिक गया। अरे किधर बिका? अब बाबाजी का खेला है क्या? बिक गया बिक गया बिक गया। इतना उल्लू बनाया जा रहा है पब्लिक को, माय गॉड। मेरे लिए तो अच्छा ही है, बहुत मौका मिलता है बेचने का। अच्छा, बट आई एम वरीड अबाउट पीपल हु बाय अडानी, अंबुजा, दिस दैट। व्हाई डू यू बाय? फॉर व्हाट रीजन? ले ना अच्छा शेयर, सीमेंस, ABB, ऐसा सब शेयर लो ना, तुम्हारा जिंदगी सुधर जाएगा। नहीं तो ये सब शेयर लोगे ना, कुत्ते की मौत मारोगे। Sorry for that language, but I'm frustrated. Why people are not buying good shares? And by no definition, Reliance is a good share. Please. हाँ, और दूसरा बात है, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड्स। वो कैसे गिनाते थे, एक स्पेस में था, बोले 10 साल में इतना CAGR हुआ, ये हुआ। अरे मैं बोला 10 साल पहले कौन लिया था? 2 साल पहले लिया, उसका CAGR गिनाओ ना। So they are hiding behind statistics, and it's not their fault. They are doing mis-selling, and you are suffering. Why would you want to keep mutual funds? First thing, if you are a bit active in the market, find out 4-5 good shares, purchase it and go to sleep. Why do you pay 2% annually for him to manage your portfolio, and it doesn't give any return? Impossible. One prophecy I'll make. I say 12,000. I don't know it will happen or not happen. But for sure, your portfolio will be down by 50%. Take it in writing from me, except you are in few good shares. Otherwise, there is nothing that can save you. Axis Bank, सूती ने बेचा, गवर्नमेंट ने बेचा,
बेन कैपिटल ने बेचा, बेन कैपिटल और बेचेगा कौन? अब पब्लिक 90 शेयर्स 200 शेयर्स हो, कब तक आप झेलोगे उसको? और जो पुराने इन्वेस्टर है ना, सबके घर में अभी भी अटैची मिलेगी रद्दी शेयरों की, कि जो डिलिस्ट हो गए हैं, लेकिन संभाल के रखते हैं कि कभी कुछ निकल आवे। तो ज्यादातर शेयर ऐसे ही है अभी। एडिक्सन, पीआई, व्हाट नॉनसेंस! ऐसा कोई वैल्यूएशन होता है क्या? पागल है क्या? वो फंड मैनेजर और प्रमोटर साथ मिलके कमीशन लेके उछालते रहते हैं। कब तक उछालेंगे? फाइनाइट है ये सब। Stock market is a finite game. You cannot rig anything infinitely. I have seen and I have seen many instances where rigging is on and I am always on the other side. कुछ नहीं करते ये लोग, खाली उछालते हैं। उछालते उछालते इतना उछाल लेते हैं कि बर्बाद हो जाते हैं खुद। बाद में पैसा नहीं रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग मेहरबानी करके फालतू शेयरों में मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए प्लीज। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ ना, कोई 2 शेयर लेता है दीपक नाइट्राइट का। वो स्क्रीन पे है, मेरे पास एक स्क्रीन कि इंडिविजुअल ट्रेड्स आते हैं, तो दुख होता है। साला गया किसी का 3600 रुपया। ऐसे वाई वेस्ट मनी? और 90% of the people trade in this market just to take a kick out of it. उनको नशा चाहिए, नशा नशा नशा। अगर आप मेरे साथ बैठोगे ट्रेडिंग में, मैं पूरे 6-7 घंटे का जो ट्रेडिंग आवर्स होता है, सिर्फ 10 मिनट ट्रेड मारता हूँ, बाकी बैठा रहता हूँ। The point is, learn how to sit quiet. Learn how to be away from the machine. Every tick you want to trade, don't do it. Both expensive है। India का trading is the most expensive in the world. You must not be aware. इतना charges, ये वो सब मर जाएगा। So if your trade is not a quality trade and just a fickle trade, you will lose on the trade also and you lose on the expenses also. Sit far away from the machine. At least have a distance of 4 feet between the machine and yourself. Every 10-15 minutes, get up from your chair or sofa or wherever you're sitting, stroll, go out, smoke, chew, pan, whatever you want to do. Come back again repeat it. That's how you kill time. You don't kill time by punching orders. Is perfect suicidal way. Perfect. And a lot of people believe that holding a trade is the panacea. No. Holding a stock is a panacea. A good stock, yes. This downturn will come, it will be over in 9 months, whatever, 4 years, 5, whatever. But the stock is good, you will get your price. But if you have a position, that's futures.
you are in for a rude shock. Your position will be squared up at the bottom only, nothing else. Only at the bottom. Now, there are many friends who are very bullish and have blocked us, and we are very bearish and we have blocked them. Oh, ठीक है. But you be bullish or you be bearish. But when it comes to trading, when it comes to trade, be active, be on the right side. Trading is all about being on the right side and nothing else. I have a penchant for downside, so I don't trade much on the upside. But when there is a downside, I make a killing because I move with the trend. I don't say नहीं मैं तो लूंगा ही कितना भी घटेगा. अरे यार ये जीत में तो है ना. ओ पांडव और कौरव के वो जुए में जो भी हुआ होगा वो हो गया, हार गए से जो भी द्रौपदी ये हो रहे. So please don't go against the trend. You will get screwed up so badly you will not realize. And I think Sarvendra will say 1600 would be the bottom. But my thinking is there is no 1600, 15200 or forget all that. Stocks, they don't have a bottom. What will you do then? So please keep your ego in your backside or in your pocket while you are trading. I fight with my friends that I'm bearish, and at 9:15, my first transaction is I have bought. For me, it doesn't matter. My view is secondary. I have to do what the trend says. Though it's a very rare occasion, but the point I'm making is be with the trend. Don't fight. And नहीं मेरे को तेजी लगता है. क्यों लगता है तेरे को? ABC नहीं मालूम है कुछ, तुमको कुछ नहीं मालूम है. मुझे 30% मालूम है, तुमको कुछ नहीं मालूम है. काय का तेजी लगता है ना मंदी लगता है. If I ask anybody two questions about a company, they will not have an answer. जेब में 2 लाख 1 लाख लेके भाषण ऐसा, और वो ट्रोलिंग 12,000, हा हा हा. अरे 12,000 क्या, तेरा पट्टू निकल गया, उसका क्या. और और एक ओके, one clarification again. I stammer at times. Okay, it's not a good thing for me to say, but yes, I stammer. बहुत लोग लिखते हैं पी के आता है क्या. अरे व्हाट यार, मैं 65 साल का हूँ, तुम 24 साल का होके ऐसे लिखता है. तुम्हारे माँ बाप ने क्या लिखा है, क्या सिखाया. पी के आता है हाँ, और बोलते हैं क्या फूकता है, फूका ही नहीं जिंदगी में. So I think about this Adani, जैसा ये पोल है वैसा ही ये बाजार है. और एक मेरा कंजेक्चर है, ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आई डोंट नो. बट आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग that all this while from July 21, Nifty was managed by none other than Adani brothers. Now they don't have money to fuck also.
So they don't have money to fuck also. So I'm sure this Nifty is going to go to its natural level. I don't know what is what. But from the if you would have seen today the movement of Nifty, it was now shattering. If it happens tomorrow again, we are all gone. And as I said earlier, if mutual fund redemption happens, 50,000 or a crore, uh, no, sorry, 50,000 crores or 1 lakh crore out of a AUM of 30 lakh crore or 35 lakh crore, what will happen in the market? Who's got the balls? I think I'll stop here. So मैं बोलूं? Audible, sir? Hello. हाँ बोल। हाँ. तो ये जो आज हुआ ना, Reliance closing below 2300, it looks like a very bad omen to me. This was a support for almost a year and a half for Reliance, and this is the biggest heavyweight which can move the markets up or down. तो यहाँ पे जो सेलिंग हो रहा है खतरनाक हो रहा है. That's one thing. HDFC Twins दोनों के दोनों गए गंदे वाले. Then the thing about staying away from your positions and not looking at the markets too much. So me and sir keep talking like 4 hours together in a day during the market hours. तो वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा ध्यान हट जाता है. So else what happens is to most people, they will try to book profits as soon as possible, but they run their losses. So if you have to run your profits, you have to stay away from the screen. That's the only solution. नहीं तो तुम देखोगे इतना आ गया भाई बहुत हो गया काट लेते हैं. That's not the way you trade. That's what differentiates a trader from being a amateur retail guy to being a professional who can handle tons of money. तो वो बात है कि people do not understand that very clearly. And then about the US markets and the coupling, whatever you say. I think Indian markets are decoupled entirely from the US markets because they were decoupled before also. As Sir said कि अदानी भगा रहा था बाजार, which I believe it's true. अभी हो गया है उसका काम. So I think from now on, no matter let's say if US markets fall by 1%, we could fall by 2%. It's not a big deal at all because we have outperformed the US markets by a huge margin compared to let's say 6 months back or a year back. It's quite staggering. So वो चीज़ है. And then about psychology, people tend to run their losses, thinking that it's going to come back, and that is what this recency bias. That's what I would call it. People who are on the long side, they would think कि भाई यहाँ पे तो लग गया bottom 17,000 नहीं टूटेगा यहाँ से पलट जाएगा because LIC आ जाएगा पता नहीं कौन आ जाएगा क्या नहीं. The situation right now is completely different because you've seen the bank runs happening all across the world. Even in the Europe, okay, even in the Europe, we have seen BNP Paribas falling by 8%. In fact, that's what triggered our markets into a sell-off in the second half today. तब तक तो तुमको दिख रहा था कि बुलिश है भाई ये नहीं टूटेगा करके. That is the problem, कि people are too adjusted to the recency bias कि they think यहाँ से पकड़ लेगा and that's gonna cost them very heavily. That's for sure, no doubt about it. See, मतलब ये सिंपल सी बात है. तुम्हारे एमटीएम को दिखाता है कि भाई लग रहा है पैसा तो समझ में आता नहीं है क्या. काटो ना सौदा, काट के भाग जाओ. I made a tweet recently, I think on Friday or something, saying that if you know how to sell, there's tons of money to be made in this market.
and then some idiot comes and puts a comment saying that why don't you show your 2 or 4 lots, saying कि how much money you've made. So वो जो भी हो, अगर वो सुन रहा है ना इस पेज पे, I'll give him a challenge. No. Please stop Leave it. that. Yes, I hope. Yes, I'll not go there. I'll just leave that over there. हाँ, तो वो topic छोड़ देता हूँ. And then yeah, coming to this one, the bankruptcies filing and all that. Our banks are in a much more bad shape compared to what the US banks are. Is that people do not see that? बहुत ही खराब है. If you look at MSME loans, no one's ever been able to pay it. बहुत ही खराब है. Inflation's going up, raw material costs going up, and then the consumers, wherever the demand is, even they're cutting down because majority of our orders go to Europe or US, and वहाँ पे हो गया slow down, तो कहाँ से तुमको आएगा भाई orders? It's a very precarious situation. Be very careful. And ये buy dips जो करते रहते हैं ना, maybe you might succeed. For out of 10 times, you might succeed like 7 times or 8 times. But then the twice that it doesn't, it'll take away your entire money. That's for sure. तो ये भी 17,000, 16,800 जो भी सपोर्ट लिख के बता रहे हैं, 16,800 might hold or might not hold, I'm not sure. But then looking at the kind of selling that's happening in the index heavy stocks, I do not think it's gonna stop there. तो वो बात है. चलो ठीक है. डॉक्टर अमित जी बोलिए. गुड इवनिंग सर. आवाज आ रही है सर? आ रही है. यस सर. तो जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है मींस बैंकिंग सेक्टर यूएस में, तो द फर्स्ट टाइम आई थिंक फेडरल बैंक एक रिलीफ ब्रेथ ले सकता है और दे आर लिटिल बिट अचीविंग समथिंग टू प्रोग्रेस देयर ओन डायरेक्शन अबाउट द इन्फ्लेशन. तो वो ब्रेक करना ही चाहते थे, तो उसी वजह से रेट दे आर फास्टेस्ट पेस दे आर राइजिंग. तो अभी एक ये वहां तो उनका ये मैं सोच रहा हूँ और मेरा ये मींस ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने तो ब्रेक लिया कि थोड़ा बहुत पैनिक आएगा मार्केट में, तो वो अच्छा है उनके लिए, क्योंकि साइकोलॉजी चाहिए कि पीपल आर लेस देन टू कम डाउन द डिमांड. ओके. और दूसरी चीज वो है कि यूएसए में तो काफी चीजें मींस जो भी जहां खराब है तो उस सेक्टर पे डिस्काउंट ऑलमोस्ट 70% या 50% हो चुकी है. मगर हमारे यहाँ क्या है कि काफी चीजें अभी डिस्काउंट नहीं हुई है. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पेट्रोल डीजल ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए, वो अभी ये डिस्काउंटेड नहीं है और वो अर्निंग पे दिख भी रहा है, सेलिंग और प्रॉफिट में. और वो आज नहीं तो सूनर और लेटर इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द प्राइस. सो हम तो वैसे बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, तो आज नहीं तो कल होने ही वाला है. तो हाउ मच दे आर स्ट्रेचेड दैट विल बी डिपेंड ऑन द लिक्विडिटी एंड पीपल साइकोलॉजी. तो अभी भी डेटा जो दिख रहा है मार्केट का, जो भी हम सेंटिमेंट के हिसाब मींस देखे तो फॉर एग्जांपल अप्रैल का प्रीमियम अभी भी 151 है रुपीस. तो पीपल तो अभी लॉन्ग छोड़ नहीं रहे, तो हाउ मच दे आर स्ट्रेच देखते हैं. मगर जो लिक्विडिटी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की अब तक 3 साल की हम देख ले तो 4 लाख करोड़ ऑलमोस्ट दे आर पंपिंग मींस पंपिंग और इन्वेस्टेड इन द मार्केट. नाउ नेक्स्ट 1 year they are able to means deploy 1 lakh more with the current scenario, that will be the questionable. तो वो तो हाई रिस्क लग रहा है. तो जिस हिसाब से मींस देख रहा हूं मैं, तो वो तो वैसे भी फंड मींस इकोनॉमिकल भी देख लो, कोई भी पैरामीटर पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हम बुलिश हो जाए. और इन्फ्लेशन में मींस फेडरल बैंक ने 4.7 ट्रिलियन तो प्रिंट कर दिया, तो अभी तक उनकी बैलेंस शीट जो डाउन हुई है बेरली
600 बिलियन ही हुई है, 600 लास्ट जब मैंने देखा था तो लिक्विडिटी तो है मार्केट में। और दूसरी जापान और चाइना जो अभी लॉकडाउन रिसेंटली हुआ तो उन्होंने भी बहुत इजी पॉलिसी की है, उसकी वजह से कमोडिटी पे भी बहुत स्पाइक हुआ। तो देखते हैं इन्फ्लेशन में क्या होता है, और कल क्रूशियल डेटा आ रहा है, वो भी एक देखेंगे। तो ये सब तो ऑब्जर्वेशन है। और निफ्टी में अगर लेवल तो काफी लोग देखते हैं, मगर वो ज्यादातर मैंने देखा यूएस में जहाँ पे मेजर अल्गो ट्रेडिंग होती है वहां पे मींस मशीन से ये लेवल इजीली मींस डिसिप्लिन हो सकता है, मगर हमारा इतना मैच्योर मार्केट है नहीं। तो परसेंटेज वाइज भी देखना स्टार्ट कर दो। इफ यू बिलीव दैट 3% मूवमेंट इज 1 SD निफ्टी, तो 500 पॉइंट तो ऐसे ही आ जाएंगे। और 1 वीक का भी देख लो, 1 वीक में 3% अगर डाउन जाएगा तो 500 पॉइंट, दैट मीन्स तो यहाँ 17,200 से 16,500 तो ऐसे भी आ जाएगा, और 5% ले लो तो करीबन 1,000 पॉइंट हो जाएगा। तो ये लेवल बेवल के अलावा भी ये भी देखते रहो, जो भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहा है। आई मीन्स मुझे तो उस पर बिलीव भी नहीं है, इट इज द टोटली रैंडम। आप सिक्का उस साल के भी इंडेक्स में ट्रेड कर लो तो भी आपके परफॉर्मेंस में 5-10% से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पर्टिकुलरली अपने मार्केट में। तो यही सब चीज है सर। बाकी तो आज सुनने में मजा आया, काफी की पॉइंट लर्निंग मुझे मिला आपसे। थैंक यू वेरी मच। MM, I'm dying to hear your voice. Please pick up the mic, please. रिक्वेस्ट भेजा है सर। चिराग, नमस्ते सर, कैसे हैं? बस ठीक है। I just hi Abhishek, hi Samant. हाय हाय। Hello, So sir. so I just wanted to add to what Dr. Amit said. The index is totally random. फ्राइडे को 3 बजे भी क्यों मूव आया, ऐसा क्या बदल गया 259 और 3 बजे कि भी बैंक निफ्टी स्टार्टेड रेसिंग अप टू अ लेवल। मतलब ये तो there is nothing changing fundamentally then, right? So clearly it is being managed. If somebody feels कि अरे नहीं it is not being managed, तो I think you should just exit the market, number one. Number two, just adding to what Dr. Amit said and what previous speakers said, I just want to bring a stat that was just published a couple of weeks ago. 10,000 MSMEs shut down last year, right? 10,000. And the year before that, 6,000 MSMEs shut down, right? So FY23, 10,000. This is Business Standard I'm quoting, Business Standard Financial Express. 10,000 MSMEs shut down in FY23. 6,000 MSMEs shut down in FY22, right? And here's the kicker. Between 2016 and 2022, around 10,000 MSMEs shut down. So in a 6-year period, 6,000 MSMEs shut down just in 1 year. ठीक है, अब आप देख लो क्या है, what is the state of the economy, ठीक है? Whoever is telling you whatever story, right? Please try and corroborate it with what the numbers that are coming in. In the late 90s, American economists, right, who wanted to, who wanted to fact check Chinese growth rates in early 2000s, they used to say हमारे पास एक proxy index है उनके growth का। वो proxy index में होता था electricity consumption, cement consumption, things like that, right? If you Google it, you'll find it also. I forget the name, right? Try and do similar things for India. How much is electricity consumption growing? Is it growing at all or not? And India's story is all very fine. We are all Indians. I mean, there is no other place we can go to, right? So we have to live here. So whatever India's story you want to believe in, please
please do a reality check on it. Right? Most people on Twitter are traders, right? They know how to take money from the market. Most of us, people like me, are not. So they will come and lose money. So please be very careful what Sharadji is saying, what other speakers have been saying here. आप आसपास does the stats pass the smell test. आपको दिख रहा है क्या आसपास? मैं अभी नीचे गया हुआ था, अपने कॉलोनी के नीचे गया हुआ था. there's a woman, वो ना ठेला लगाती है, पकोड़ा बेचती है, literally. उसके साथ ना 2 बच्चे खड़े हुए थे. I'm assuming her kids only. Can't have been more than 20 to 23-year-old. Okay, he seemed college going type. But वो उधर खड़ा हुआ था उसके स्टॉल में. Right, so this is the state. So please be very careful and cautious when somebody tells you that there is a great story. Yes, there is a great story. We have no choice. We have to believe that story. Otherwise, हम कैसे जिएंगे यहाँ पे? But please, take the smell test yourself. That's all I'm saying. Thank you. Yeah, man. What do I say? It seems like there's a lot of gloom today in the conversation. But what the gentleman just said is absolutely right. If you don't mind, can I just talk about it like 1 or 2 minutes? I don't want to kind of kind of add to the gloom, but I just wanted to Or 10 talk minutes. about it. Or 10 minutes. Or 10 minutes, stick. No, I don't want to talk about. I don't want to talk 10 minutes because I'll just give you my perspective on this. Look, what the people just before me mentioned is absolutely right because I do And feel that we are suffering from we are suffering from what I feel Samar, is mic बंद करो. हाँ सर. I think what we seem to be suffering with is the policy response that we are probably giving and the way we have implemented some of the policies. Very grandiose in our kind of expression of this. But this government went on to declare a few things, but didn't quite, do that based on the diagnosis. We talk about GST, we talk about demonetization, we then talk about COVID, and uh, our growth was anyways in the lower numbers. I mean, I was reading somewhere yesterday that our kind of economy is if it has to grow, it has to grow somewhere between 6.5 to 7% naturally to go ahead. And here we have just been inflating numbers and probably showing a picture. Look, I don't mind if we are finding things to celebrate when the situation is bad. That is a natural response of any government. But I think they should also come out clean because I don't feel that this government has necessarily provided any articulation of the problem, the nature of the problem, or for that matter, their diagnosis is sound enough because then their policy responses would have been based on those diagnoses. Um, well, we hope that they know what they're doing, and all of what they have set up is in the right direction. But somehow there seems to be this belligerence of not accepting it. Someone mentioned the MSME. The MSME sector has shrunk, and the main reason for that is because I feel that someone noticed. Did not notice the DNA of this country, which is that 90% of the MSME is unorganized. And if you quash the inforमल क्रेडिट सिस्टम जो पैसे पैसे मार्केट से उठाते थे वो अगर आप लोग quash करोगे तो you have to replace it with something that is that can support that credit system. Giving a credit the CLGS the credit line guarantee scheme and not necessarily making it easy for people might not be the answer. Now, jobs have disappeared. We are unable to revive that informal credit system that existed. And there's no mechanism to support them in the more kind of formalized financial sector. I'm all for progress, I'm all for development, and it needs to be formalized.
but it needs to be taken in a stepwise manner to get to where things need to be. And I do feel that there seems to be this black and white or switch on and switch off kind of a mode that we seem to be operating in, rather than really understanding the pulse of the nation and taking it slowly. Indeed, digital payments have improved. Indeed, we are getting into the digital way of working. But just imagine 90% of our work, or 40% of our contributions come from manufacturing, if I'm not wrong, of which 90% and over actually are unorganized. So how do we make sure that they survive? In fact, all of their schemes like Make in India and Stand Up India and Skill India and all of those are not giving us the finesse that is needed. Because if you look at the manufacturing sector that was contributing earlier in the decade from 2004 to 2014, we were about, I would say, we were about 16.4% was what manufacturing was contributing to the GDP. And here in 2014 onwards, including the COVID recession that we've taken, we are contributing about 14.6, if I'm not wrong. Just remembering the numbers off the top of my head. And why is that? That's because of the way manufacturing has been treated, and the fact that I just released a few other one pages a few days ago, talking about the fact that we are not doing enough in order to revive that system. And I do feel that services sector, the other one, which is about 30% or so of the employment, even that has not been quite growing. And when I talk about services, I'm talking about banking and hotels and others kind of industries at the stage. And unless you give people some money, and people without spending some money, I don't think the economy can really start flowing. Or there seems to be a total lack of investment in that kind of an area of the market. So overall, I just feel that we always find things to celebrate when the situation is bad. I can kind of continue to maintain. It's great to celebrate the GDP of our country increasing, but we haven't achieved our targets. We said we'll be 5 trillion by 2040, 2024 or 2025 or whatever was the target that was given, and now we've conveniently moved it goalpost ahead. We seem to be celebrating the fact that we are bigger than UK at this point, forgetting the fact that GDP in terms of per capita is still lower. And the rupee has, kind of depreciated, although it's holding up against the other currencies. And, Fed is even more, I would say, aggressive in terms of, and our trade deficit is also increasing. So there are a number of factors if we really consider, but the pulse of the nation is, as we end, someone needs to set the policies. It's great to say that these policies are being announced, but how are they being really executed? What's the last mile delivery of some of these policies? Are they really benefiting the poor? Is a consideration that I'd like to kind of place in front of whoever is whoever is thinking about these things. I may have rattled a few things. I can deep dive into all of this, but I know you guys are not interested in it. So I might just take a pause for now. Thank you. Whatever you said, I could have said in one sentence. GDP is 4.4%. That says it all. Exactly, sir. Exactly. And we need to be growing at 7% and above in order to keep everyone employed. It won't happen because March quarter GDP will be 4.6. And next year, it's actually a hogwash. We just need to rattle and nothing. And why do you say that you heard a lot of gloom on this space? Cautioning is not that was glooming. the perception. That was the perception that I took away when in the last sort of 5 minutes when I joined. That's what people were playing back, and then people went into some other sectors. So that's the conclusion that I took in. It may not be gloom. Who knows? I wasn't here for the entire space at all. No, but MM,
Tell me one thing. If we go to a party, we would dance. If we go to a funeral, we'll mourn. So the situation is like a funeral. So it will be unwise to make a partisan. So that's why we were a bit gloomy. Excuse us. I, We I are take I take heart. Please do continue. Thank you. okay. और कौन है भाई? समझ भाई? Yash was there. कौन है? Yash was there, sir. Yash. कहाँ चला गया? चला गया यश भाई. नहीं है सर. I think he has left, sir. विशाल को कुछ बोलना है क्या? ले जाए इसे. आपने बोला. यही भी है. और किसी को कोई भी सवाल पूछना है एक्सेप्ट पर्टिकुलर स्टॉक्स, गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल, आई विल आंसर. ये पूछने का नहीं, स्टॉक नहीं पूछने का, ऑयल गोल्ड सिल्वर नहीं पूछने का. और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. Sir, Vishal bhai is traveling, so he will not be able to join. ओके, थैंक यू. तो फिर अपने वाइंड अप करें Yes, sir. भाई. किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है कि मैं कितना दारू पीता हूँ, कितना फूकता हूँ, कुछ भी पूछो. एक मेरी एक कंडीशन है बॉडी में. मेरे हाथ हिलते रहते हैं, तो मैं सोचा पार्किंसन होगा. डॉक्टर बोला नहीं, पार्किंसन नहीं है, वो कोई सिंड्रोम है. क्या? अब भूल गया मैं. चलिए, तो कुछ कोई सवाल नहीं है तो. Yes, sir. We can wind up, sir. Yeah, we can wind up, sir. सर्वेंद्र, कुछ बोलना है तेरे को भाई? नहीं, सर्वेंद्र sir, I think he is also left. मतलब भी connecting आ रहा है. अच्छा अच्छा. Okay, folks, thanks a lot for being here. आकांक्षा आ रही है सर. एक मिनट सर. अरे किधर है आकांक्षा? किधर है आकांक्षा बहन? बोलो. दे रहा है, दुरुस्त है. हाँ, बोलो आकांक्षा. गुड इवनिंग. आकांक्षा, गुड इवनिंग. अनम्यूट. नहीं लगता है, थक गए होगी बेचारी. ठीक है सर, तो वी कैन वाइंड अप सर. या ओके. थैंक यू. गुड नाइट एवरीबॉडी. गुड नाइट. गुड नाइट सर. Good night, sir. Good night, Samal. Good night.